of early embryo. What a vibrant start. Well done, Isha. Thank you. The future of India is in safe hands. Now, can we call upon Shania Sangoi, daughter of Kushi and Rohil, and Samaira, daughter of Surbhi and Atul Jain, from Little Hearts Come Big Love. Shania and Samaira with I Love My India dance. You ready?
कल भेजा है ना, ये जब भी आपका 1 मिनट होगा तो मैं फोल्डर पे सेल ऑर्डर पे भेज नहीं पा रही थी, कैन आई जस्ट पुट इट इन सीरियल ऑर्डर एंड देन वी विल, बीच में कैच वर्ड्स होंगे तो देन वी हैव टू पुट दैट यूजिंग whenever you, मतलब जब भी खत्म होता है और तीन आपका फ्री होता है तो आई जस्ट पुट इट इन अ सीरियल ऑर्डर, आई जस्ट वेट हियर आफ्टर द प्रोग्राम।
about listening, about service, putting others forward before yourself. That's the real leadership. And I am looking forward to more performances. I can see the kids are very excited to see the performance is not my speech. So thank you so much for having me. Jai Hind, Jai Bharat. Welcome everyone. Today we are here to celebrate a country that is home to hundreds of languages, thousands of traditions, and millions of dreams. This is the land where every corner has something beautiful to offer. Let me introduce you our amazing regions. North India. Namaste, everyone. I represent North India. From the snow-covered mountains of Kashmir to the golden fields of Punjab, my land is full of courage and beauty. Our soldiers protect our borders and our farmers feed the nation. We celebrate Lori, Baisakhi, and many other colorful festivals. Now we have West and East India. Namaste. I represent the west and east of India. From Gujarat, the land of Mahatma Gandhi, to Rajasthan's magnificent forts and Mumbai's busy streets. And from West Bengal's literature to Assam's famous tea gardens and Odisha's rich traditions. We are known for bravery, business, arts, music, colorful festivals, and warm hospitality. South India. Welcome. I represent South India. We are proud of our ancient temples, classical dances, rich traditions, and delicious food. Our scientists, teachers, engineers, and artists contribute to India's success every day. Do you know what I think? North India is definitely the best because we have the Himalayas. Really? We have Mahatma Gandhi, Mumbai, Durga Puja, Bihu, and famous tea gardens. But our traditions are amongst oldest in the world. Our food is definitely the tastiest. But our festivals are the most colourful. Our temples are the most beautiful. My region is the best. No, mine is. We are number one. My dear friends, why are we arguing here? Can a rainbow be beautiful with only one color? No. Can a garden bloom with only one flower? Can India shine with only one region? Every part of India is very special. One grows food, one protects our borders, one preserves our ancient traditions, one inspires us through art, music, science, and nature. Our differences do not divide us, they make India stronger. Unity doesn't mean being same, it means standing together with love and respect. I respect your languages. I celebrate your festivals. I am proud of every part of India. No matter where we come from, no matter what languages we may speak, no matter what food we eat, we stand together with love, respect, and pride. Unity and diversity is India's greatest strength. We are proud to be Indians. Jai Hind, Vande Mataram.
हैंग होके निकल गए। ये वाला भेज। Brilliant teamwork. Brilliant teamwork, girls. ये लगा देंगे। What a creative tribute. Thank you so much. Next performer is the son of Nikita Kothari, Manish Kothari, young voices with powerful thoughts. Presenting Mosh Kothari on stage, please. Jai Jinanga, respected chief guests, parents, and dear friends. Today, we gather to celebrate a historical milestone for India. On 15 August 1947, India gained its independence from British rule. We gather here and celebrate the spirit, resilience, and the incredible journey of modern India. This day is also a reminder of the immense sacrifices made by millions of freedom fighters. Leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, and Netaji Subhash Chandra Bose taught the world the power of courage and determination. We owe our freedom to the unbreakable spirit. Our greatest strength is unity in diversity. India is a vast land of different languages, religions, cultures, and traditions. Yet, despite these differences, we pulse together as one single nation. Living here in multicultural London, we see that reflected beautifully. We prove that variations in background do not divide us. They make our collective fabric even more stronger, richer, and vibrant. Now, I would like to talk to you about an important aspect in today's scenario, which is respecting previous generations and what's the role of the youth in today's scenario. As the youth, our progress is only possible because we stand on the shoulders of a giant. We must deeply respect our parents, grandparents, previous generations. Whilst the freedom fighter won our country's independence, the generation that followed worked tirelessly to build India's robust service sectors, affordable healthcare, strong democracy, and many more such achievements. By listening to their wisdom, valuing their experiences, and honoring their hard work, we preserve the strong foundation they built for us. Today, India is a global leader in science, innovation, and technology. Now, the future relies entirely on us. We can positively contribute to our country's progress by simple but powerful action, such as excel in education, embrace technology, promote kindness, and the most important, protect the planet. To conclude, let us all promise to carry the value of peace and unity and progress where we go in the world. Thank you, Jai Hind.
Thank you, Mo. Very well said. Thank you for reminding us what freedom is. Now I would like to call Mr. G and he will introduce few other guests. Please come. Thank you. Jai Jinendra, everyone. Can you hear me right? Okay, sure. What an uplifting program so far, and I thank the executive committee and my trustee colleagues for making all the efforts in shaping an event of this nature. I'd like to take the opportunity to welcome some of our dignitaries who have joined us, and I will give the introduction about some of the next few speakers. So thank you, Kiran Uncle, Kiran Mehta Uncle, Manal Bhai from Money Council, Vinod Bhai Kapasi from Marvel Foundation, and Mr. Satyanarayana Jain from Dad from Faridabad, and Amit Oswal's dad, thank you, Uncle, and Sushma ji, and many of you, and also Bhai Chandaria's wife, Auntie, thank you. Yosna Band, Gujarat Samachar newspaper as well. Thank you for coming. So may I introduce the next two speakers. We have Councillor Tariq Mohammed, who this is his first interaction with JVB in Penang. Yeah, so we are building this community center in his ward. Yeah, you can imagine, so he has a huge role in seeing and representing us when we move there. So obviously, without his support, we will struggle, and we're going into a new area, the leading council. He wanted to see what residents do, who we are, what's our facility here, because he has to face the residents. And so really good to see you, sir. Thank you for coming all the way. Thanks for all your support. So and also we have Dr. Gautam Bansali. I will introduce him shortly. May I also thank Mr. Anil Rana, who is the director in Network Health. He just left, and legendary engineering director in Network Health. Thank you for coming, Anilji. So may I invite Councillor Tariq Mohammed, please, and address the community and how you found JVB and what's your first impression, and hopefully we will be welcome in your area. Thank you. Councillor Tariq Mohammed, thank you. The councillor has been for at least 10 years in politics, or maybe a lot longer. Longer than that. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you so much. It is my ultimate pleasure and honor to attend first ever event with your community, with Jain community, and I'm sure it will be not the last one. The many more on the way. And could I say that I'm very impressed about your trustees, your managing committee, and your hard-working members are doing and building the one big, massive, and well-organized community center in Perivale and London Borough of Ealing. And I would like you to welcome there, and I will be probably, hopefully, touch wood, the next 15th of August, we will be celebrating in the new center in Ealing. Thank you. And when I come here, I was a bit worried about that. But honestly, I feel this is like a home. I feel like we are working together. And like you rightly said, if we will work together, things can be done. So, ladies and gentlemen, whatever we are celebrating today, the Independence Day, but like Madam Mayor said, we should and must not forget the people who lost their lives, who lost their houses, who lost everything to set us free. The freedom we are enjoying today is because of their sacrifices. We should and must forget those people who sacrificed their lives.
And the second thing, I am very happy to be here when I see the youngsters are performing here. So like your colleague said, the India future is in the safe hands. When I see youngsters are participating in activities, it means that India is in the safe hands. We are here to support you. As my colleagues are supporting your work in Ealing. We welcome you, we are here to support you, and we want to see the flourish in Ealing, not in Ealing, not in London, but all over the UK. Thanks ever so much. Thank you so, thank you so much. India. Okay, so we will start again with our performances. And can we call Mrs. Vanita Jain? She's going to sing a song, "Ae Watan Tere Liye" from Karma. And sorry, 1 second. And Nia, You are next, okay? So be ready. एक मिनट फ्लायर दे दिया है हाँ जी तो फोटोज वगैरह थोड़ा डिस्प्ले में लगा दो ना फ्लायर This is the song, very patriotic song from film Karma. मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ तू। जारी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हमारा है। फोन you have your phone yeah इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है वतन तेरे लिए, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए।
Jai Hind. Beautiful, Marita ji. That was a beautiful rendition indeed. We want you to sing more in upcoming events. That song really touched everyone's heart, isn't it? Can we have a big round of applause again? That's such a classic song, isn't it? Moving on with the next performance. Can we have Nia Kucheria, please? Words that inspire. Words that inspire. She's up, she's ready with a beautiful speech. My name is ये पूरी slide है. Today I'm अब तो हिल जीत गई. Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August every year. On this day, 1947, India became free of British rule. We remember and thank our great freedom fighters like Mahatma Gandhi and Rani Lakshmi. I am proud to be an Indian and I love my country, India. Jai Hind, Jai Swaraj. Very nice. Oh, my mom, Nia. Thank you, Nia, for very thoughtful and inspiring speech. Now we would call Jeet again. Thank you. Am I audible? Yeah. Can you hear me at the back? Okay. I'd like to take the opportunity to introduce our next guest speaker, legendary Dr. Gautam Bansali from Bombay Hospital. He landed from Mumbai last night. First time I've ever spoken to you, sir. He comes from a region I come from in Rajasthan, India. He's done so much service for the community and for the what do you call it, Bombay Municipal Corporation during the COVID. He's done remarkable services. He has won several awards. He's been the Maharashtrian of the Year Award and his endless list of the awards, Guinness Book Record, and the work he does with the major policy makers, whether it's the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Fadnavis, or whether it's with Sachin Tendulkar, or whether it's with Ambani's, etc. And hopefully he will take some of the good work we do here back to Mumbai. He is actually a bit shocked, as in a positive way, to see what we do here in London. He has come to London before, but his family has come for the first time. Babiji is here, and the son who studies in the US is also here. And thank you for coming. So maybe please come along and inspire us and what the community service, and he's also done several projects with His Holiness Acharya Gurudev Mahashamanji as well. When there was Chaturmas in Mumbai, and several projects he has done. So maybe he can enlighten us on that. So good to have you, sir. Please come and inspire us. Thank you. And thanks for rearranging your plans for the day. Yeah, I didn't give you much chance to say no. Thank you. Hello. Thank you, Gigi, for inviting me for this wonderful event. यहाँ पे आप लोगों के बीच में देख के लंदन में मुझे कहीं से किसी भी एंगल से ये नहीं दिख रहा है कि मैं लंदन में हूँ या हिंदुस्तान में हूँ। वही चेहरे, वही शक्लें, वही जोश, वही बात करने का तरीका, वही मिलते ही जय जिनेंद्र बोलना, कोई अच्छी बात होए तो उसके बाद में ओम अरहम बोलना, वही संस्कार, वही लोगों से बैठना, महिलाओं का इधर बैठना, पुरुषों का इधर बैठना, बच्चों का बीच में बैठना, साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाना, एक साथ जोश में खड़े होना, ये कल्चर, ये सभ्यता सिर्फ हमारे हिंदुस्तानियों में ही है। और मुझे कहते हुए बड़ा ही फक्र होता है
और बड़ा ही एक अंदर से आत्मविभोर और बहुत ही इमोशनल फील कर रहा हूँ कि लंदन में आकर के फ्लैग होस्टिंग में आपने मुझे बुलाया और इसका बड़ा सम्मान दिया लंदन की धरती पे मेयर मैडम और आपके साथ में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हिंदुस्तान से आया हूँ, हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ, हिंदी में बात करते हैं। ये हमारा शौक ही नहीं बट ये हमारा स्वभाव भी है। हिंदुस्तान जहाँ मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने छोड़े हुए बहुत समय हो गया होगा। आई थिंक कम से कम 10-15 साल तो कुछ लोगों को हुआ ही होगा। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जहाँ लोग सांप सपेरों से खेलते थे। ये हिंदुस्तान अभी माउस से खेलता है, अभी फिंगर से खेलता है, अभी फेस टेक्नोलॉजी के साथ में खेलता है। ये वो हिंदुस्तान नहीं जो सिर्फ मुंबई और दिल्ली के नाम से जाना जाता था। ये वो हिंदुस्तान है जो मुंबई दिल्ली के अलावा बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है, नागपुर भी है, पूना भी है, सोलापुर भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, पटना भी है। आप पहले कह सकते थे कि सिर्फ 3 शहर थे जहाँ पे मेट्रो सर्विसेज चालू हुई थी, ओनली 248 किलोमीटर। आज के 10 साल पहले मेट्रो सर्विसेज चलती थी, आज 1155 किलोमीटर के ऊपर मोर देन 28 सिटीज के अंदर मेट्रो सर्विसेज का नेटवर्क हिंदुस्तान में बिक चुका है। नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे तो पहले 80-90 हजार किलोमीटर के आसपास था। आज की डेट में नेशनल हाईवे 1,51,000 किलोमीटर के ऊपर नेशनल हाईवेज हिंदुस्तान के बन चुके हैं। आज अगर हिंदुस्तान की किसी भी फील्ड में बात की जाए, अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो आज के 10 साल पहले हमारे पास में 74 एयरपोर्ट थे। आज हमारे हिंदुस्तान में 211 एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो चुके हैं। हिंदुस्तान की बात की जाए जहाँ पे पहले एक बैंक में जाते थे, शायद काफी लोगों ने अनुभव किया होगा, हमने भी हमारे बचपन में अनुभव किया कि अगर पैसा जमा करवाना होता था बैंक के अंदर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, बैंक में बाबू से 10 बार नमस्कार करना पड़ता था, वो आपको एक टोकन देता था, फिर आप घर जाते थे, खाना खा के आते थे, फिर कुछ समय के बाद 2-2.5 घंटे बाद नमस्कार करने के बाद जी हजूरी करने के बाद आपको शायद पैसा मिलता था या पैसा जमा कर पाते थे। लेकिन आज जो डिजिटल क्रांति हिंदुस्तान ने की है, घर बैठे बैठे कहीं भी बैठे बैठे विद इन सेकेंड्स, नॉट मिनट, विद इन सेकेंड आप यूपीआई डिजिटल पेमेंट से पैसा आप इमीडिएटली बैंक में जमा कर सकते हैं, स्कूल की फीस भर सकते हैं, कॉलेज की फीस भर सकते हैं, अपना हेल्थ का बिल भर सकते हैं, अपने माँ बाप को पैसे भेज सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ चालू और सबसे पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसमें यूपीआई टेक्नोलॉजी चालू हुई। एक समय था जब लोग बोलते थे कि हम हिंदुस्तान को क्या दे सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहिए। आज वो टाइम बदल चुका है, हिंदुस्तान उस लेवल पे पहुंच चुका है जो बाकी वर्ल्ड की समस्याओं का समाधान हिंदुस्तान करता है। बाकी वर्ल्ड हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देखता है कि भारत बाकी वर्ल्ड को क्या दे सकता है, क्या क्या दे रहा है। आज चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज की बात हो, मैक्सिमम इंटरनेट सर्विसेज, हाई स्पीड की सर्विसेज हिंदुस्तान में है। चाहे वो आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, चाहे आप छोटे से छोटे गांव में जाओगे, आपको कुछ और सामान मिले ना मिले बट आपको मोबाइल का नेटवर्क जरूर मिल जाता है। आज आप विश्व में कहीं भी चले जाएंगे तो आपका मोबाइल का बिल भी देखेंगे तो मुझे लगता है हजारों में आता है, लेकिन हिंदुस्तान में अधिकतर लोगों का बिल 200 रुपया, 300 रुपया, काफी लोग तो 250 रुपया पर मंथ चलाते हैं, इंक्लूडिंग कितना ही डेटा जीबी उनको मिलता रहता है। ये टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल जो क्रांति हिंदुस्तान हुई है, ये टेक्नोलॉजी में क्रांति हुई है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में क्रांति हुई है, रिलीजियस जो वहाँ पे टूरिज्म चला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जाके देखिए काशी विश्वनाथ को, आप जाके देखिए महाकाल उज्जैन को, जाके देखिए आप अयोध्या राम मंदिर को, जिस तरह से उन्होंने बनाया है, सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं बनाए हुआ हिंदुस्तान में, उसके अलावा जो होटल्स वहाँ पे डेवलप किए हुए, रोड डेवलप किए हुए, आप जाके आपको आश्चर्य होगा कि जैन समाज की एक यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है तो वो राजस्थान में है, लाडलू में, जिसका नाम है जैन विश्व भारती। इसके अंतर्गत आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैन विश्व भारती के अंदर सिर्फ राजस्थान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बच्चे वहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं, ड्यूक यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पे आते हैं रिसर्च करने के लिए। अभी जैसे एक रिसर्च पब्लिकेशन हुआ था, जैन विश्व भारती, बाहर विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ करने आते हैं, स्कॉलर्स स्टडी करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं, पीस के बारे में स्टडी वहाँ की जाती है। आप 10 दिन तक अठाई तपस्या उपवास करते हैं, मास कमन करते हैं, वर्षित तप करते हैं। एक कोई आदमी आजकल अगर 10 दिन के लिए भूखा बैठ जाता है तो पूरे विश्व में हंगामा होता है, सोशल मीडिया पे हंगामा होता है कि ये हंगर स्ट्राइक पर चला गया, वो हंगर स्ट्राइक पर चला गया। जैन समाज में वर्षित तप तक की भावना होती है, महासमण ये मास खमन होते हैं, 28 की तपस्या। तो मेरे पिताजी ने खुद ने अब तक 30 28 28 कर चुके हैं, हर साल वो 28 करते हैं। ये जैन विश्व भारती का कमाल है, आचार्य मास समन जी का कमाल है, जो हमारे यहाँ पर भी समणियों को भेजते हैं, संस्कार देते हैं बच्चों में। और नॉट ओनली जैन फिलोसॉफी, शांति, समरसता, सद्भाव किस तरह से समाज में बनाया जा सके, नई पीढ़ी को कैसे तैयार किया जा सकता है, ये सारी चीजें बताई जा सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान वो अभी पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा, बदल चुका है। नाउ वी आर इन इंडिया 80। हो सकता है 20 साल बाद शायद हम में से बहुत लोग, और डेफिनेटली बहुत लोग रहने वाले हैं, 100 साल बाद जब विकसित भारत का सपना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, उसको स्वप्न को साकार करना है। और साकार करना हमारा सिर्फ काम ही नहीं है, हमारी सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाएंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर काफी लाइबिलिटी जा सकती है। जब 100 साल पूरे हिंदुस्तान के, तो मुझे लगता है कि हम इस जगह पे नहीं सकते, और बड़ी जगह और बड़ा प्रोग्राम, जीत जीत जडेजा जी शायद कहीं और हमको पार्लियामेंट में मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, और हम चाहेंगे कि इतना बड़ा और विश्व स्तरीय प्रोग्राम जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसको और आगे की तरफ बढ़ाते रहे। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी समाज की रचना, स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार करना है तो उसके लिए 3 बातें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है युवाओं का जोश, जो मुझे यहाँ सबको देखने को मिलता है। दूसरा होता है बुजुर्गों का होश, युवाओं का जोश, बुजुर्गों का होश, और साधु संतों का आशीर्वाद। ये त्रिवेणी, ये संगम जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, उसको मेंटेन किया हुआ है, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोग सबको, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक हरिवंश राय साहब, बच्चन साहब की एक छोटी सी लाइनें सुनाना चाहता हूँ जी, डेलेडिया जी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये अजीब दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक बार फिर 80वें इंडिपेंडेंस डे के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम सब लोग हमारे देश का स्वाधीनता दिवस आप लोगों के बीच में लंदन में मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे भारत, जय भारत। धीरे धीरे ऐसा बोल रहे हैं कि कोविड के बारे में, मुझे मालूम है समय की कमी है, आप लोगों को बहुत प्रोग्राम भी देखना है। कोविड का जब समय था हिंदुस्तान के अंदर, मुझे अभी भी मालूम है कि बीबीसी ही नहीं, बहुत सारे चैनल ने, हम लोग उस वक्त देख रहे थे, ये जनवरी महीने की बात थी, बहुत सारे चैनल में ये चल रहा था कि ये कोविड अभी तो इटली में है, चाइना में है, अमेरिका में है, अगर ये हिंदुस्तान में जाएगा, 145 करोड़ लोगों का देश है, हिंदुस्तान में तबाही हो जाएगी, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये यहाँ के बड़े बड़े जर्नल में छपा था। लेकिन मैं आपको बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से काम कोविड में हिंदुस्तान ने किया है, और जिस तरीके से हमारे सब लोगों ने, मैं पूरे मुंबई का कोविड का चीफ था, मुंबई मॉडल हमने दिया था, हमने वहां पे पेशेंट्स, एक पेशेंट मुंबई में ऐसा नहीं था जो इस वजह से मरा हो कि इसको बेड नहीं मिला हो। मुंबई की मोर्टिलिटी रेट पूरे विश्व में सबसे कम थी, जिस पेशेंट को जैसे बेड मिलता था, और सारे बेड गवर्नमेंट रेट पे थे, हमारे वहां कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा नहीं कमाया था। हम लोगों ने ऐसा मैकेनिज्म शुरू किया था
कि पेशेंट को उसकी कोविड की रिपोर्ट हम लोग इन्फॉर्म करते थे, हमारी टीम इन्फॉर्म करती थी। हमारी टीम उनके घर पे जाके पूरा सर्विलेंस करती थी, सैनिटाइज करती थी, आइसोलेट करती थी। एम्बुलेंस जाती थी, अगर उसको भर्ती करने की जरूरत है उसके चॉइस के हॉस्पिटल में बेड रखे उसको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल में भर्ती करना, उसका ट्रीटमेंट करवाना और सुरक्षित घर पे छोड़ना, ये सारी जवाबदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की मुंबई में करी थी। चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट हो, हमने आईआईटी मुंबई के साथ बैठ के एक इतना अच्छा पोर्टल तैयार किया था कि कोई भी पेशेंट कहीं भी बैठा हो जिसको डायलिसिस क्रोनिक डायलिसिस के पेशेंट है, वो कभी भी डायलिसिस के लिए अपना लॉगिन करेगा, उसको डायलिसिस का स्लॉट मिल जाएगा। एम्बुलेंस की बात की तो जहां तक हमारे पास में शुरुआत में सिर्फ 70 एम्बुलेंस थी मुंबई के अंदर। और हम लोगों को एक बार कोई टीवी चैनल था उसमें चल रहा था कि एक पेशेंट ने प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई और उस एम्बुलेंस वाले ने 20,000 रुपया ले लिया, बेचारा पेशेंट को लूट लिया। मैं उस वक्त हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर इकबाल सिंह जी चेयर थे, उन्होंने मुझे बोला कि टीवी में ऐसा चल रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एम्बुलेंस कहाँ से लेकर आए। हमने तुरंत वहां पे मैकेनिज्म किया, मैंने उनको सुझाव दिया। मैं कहा ये कोविड का टाइम है, हालत ऐसी हो रही है कि भाई अपने बहन को छोड़ने हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, बाप बेटी को छोड़ने नहीं जा पा रहा है, इतना डर बैठा हुआ कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक व्हीकल चाहिए, हमको एम्बुलेंस नहीं चाहिए। शहर में इतनी सारी ट्रेवल एजेंसी है, उनको बुलाओ, जिनकी टाटा सुमो है, इनोवा, ये सब गाड़ियां बुलाते हैं। ड्राइवर और पेशेंट के बीच में एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगाते हैं। ड्राइवर को 7 डेज एडवांस हमने पीपी किट दिया। आप बिलीव करेंगे 3 दिन के अंदर हमारे पास 72 की जगह पे 788 एम्बुलेंस 3 दिन में हमने खड़ी कर दी और मुंबई में हमने सड़क पे छोड़ दिया। इसमें से कोविड के टाइम में बहुत काम हुआ था, वो वैक्सीन का काम था। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस युद्ध स्तर पे काम किया कि मुंबई के अंदर सबसे पहले विश्व में वहां पे कोविड का वैक्सीन आया था। इसके बारे में और आपको अगर इसके बारे में कुछ पता करना तो मेरी जस्ट अभी एक बुक लॉन्च हुई है, अमेजोन पे अवेलेबल है, इकोज ऑफ इनविजिबल एनिमी। कोविड के बारे में है, कोविड में किस तरह से मुंबई ने हिंदुस्तान ने काम किया। आप वो बुक देखेंगे पढ़ेंगे तो उसे मालूम पड़ेगा। और बहुत सारी बातें कभी समय मिलेगा तो और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ऐसे सितारे नॉर्मली नहीं मिलते हैं, और वो भी इतनी शॉर्ट प्लानिंग में ह्यूज वर्क किया, पूरा सिटी को कंट्री को बचाया है। इस ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं और उनकी फैमिली भी आए हैं। ह्यूज वर्क ही डज, एंड उसी तरह मुझे लगता है गौतम भाई एक दिन भारत रत्न का अवार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे। इतना काम है आज मुंबई में, कोई भी काम हो गौतम भाई यूं मिनटों में करवा सकते हैं, कोई भी तरह की तरह अपनी कम्युनिटी में क्या, कहीं पे भी, भले कमिश्नर्स, prime ministers, Ambani's, either be. Gautam Bhai is always active in the social media as well. He's always here for the society and the community. अपने पुण्य प्रज्ञा जी पहले श्रमिक जी थे यहाँ पे, 20 साल रहे हैं। उसी गांव से आप गौतम भाई हैं, असाड़ा गांव है, मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर। तो इतना काम किया है पुण्य प्रज्ञा जी ने भी यहाँ, उनकी आवाज मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपका काम जो गुरुदेव के साथ आगे ही संघ के साथ करते रहें, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे बारे में भी सोचते रहिए, थैंक यू, हो सके तो। और जो भी गुरुदेव के वहाँ और कहीं पे भी यहाँ जेवीबी का काम का भी वहाँ पे बयान देंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Gautam ji. I can relate what you said. I'm from Mumbai as well. So हम यहाँ आने ही वाले थे. All the bags and everything was packed, and suddenly the lockdown was announced. So we couldn't come at that time. And what you said, it freshened my memory. So thank you so much. Now we welcome Ariana Jain, and she's going to dance on I Love My India, daughter of Juhi and Ashwini.
वीडियो का कंसर्न ले लेना अनाउंस Raina. तो कि वीडियोस This one. वगैरह सोशल मीडिया में जा रहे हैं हाउ पेरेंट्स आर This one. Yeah. ये दुनिया एक ये दुनिया एक के माथे की ये मेरा ये मेरा I love my dear. I love my dear. Wow, Rihanna, full of energy and love for our nation. And now, Yotsna Pansha, Yatsa Pacha, she's also very active in Yotsna Pansha. now I would like to call upon stage Diva Karnani Shah. I'll give a brief introduction about her. She's a daughter of Mihir Shah and Sanjana Karnani Shah. She's a published author of 4 books who published her first book at the age of 8. Today she will be talking about diversity in writing. Please come, Diva. Good morning, everyone. Jai Jananda. My name is Diva Kanani Shah, and I'm 16 years old. And I'm a published author of 4 books, 2 children's novels and 2 children's books and 2 novels. The first book that I published was when I was 8 years old, and it's called The Mysterious Island. And my latest novel that I published 2 years ago now is called Resurgence. And it's about, I guess, recently we've all seen the upcoming, relevance of AI in societies and how much it's, affected our daily lives. I remember yesterday I was talking to like a 5-year-old child at some family function, and he was, I told him this word, bamboozled, and he didn't know what it meant. So he said, "Oh yeah, I'm going to go ask ChatGPT." So, the days have changed, and back in my day, now I'm 16, so that's a bit off me to say. But, we'd say we're going to go ask Google. So now they're asking ChatGPT. So my last novel, called Resurgence, was about the upcoming relevance of AI and how the world would look like if AI had taken over the world, and the difficulties that humanity would face. Now, I'm not here to talk about my books today, but today I'm going to be talking about the topic of diversity in writing
Now, the reason I want to talk about this specific topic is because I'm a writer. I love reading books. It's one of my favorite things. And as a child, that was something I always, connected more to. I didn't really like talking to people. Books were always, a place where I could be in my own world, and meet imaginary characters and go on wonderful adventures. And as I was growing up, you decide to expand your, who you read from, different authors. And I love doing that. I love, discovering different authors and looking at different people and seeing, the amazing type of writing styles that people use. And for me as a child, the first place that I went to look for different authors was my primary school reading list. And one thing that I noticed in that was that, there are so many different authors, everybody's published various different things. However, there are not many people who were, of brown origin or people of color in general on that list. There were, and that kind of, made me feel a bit unsettled that, there's not a single Indian on my primary school reading list. No Indian has, written a book that's relevant enough to, just show off on my basic reading list over there. And, as a child, that makes you feel very hurt. It makes you feel very discouraged that, a lot of people, of my origin are not able to, make it into the big world and, write and publish books and be successful with it. And that got me thinking a lot that, why is it, India, it's just, as we've seen in all these skits and all the speeches, India is such a place of, there's so much culture, there's such, relevance of the arts, there's so many different types of dances, art, there's been so many amazing writers from India. We're home to I think the government recognizes 22 national languages in India. However, I'm sure there's many, many more, different dialects, different villages and all of that. And how a culture with such, deep and rich culture, and how do we not have that many writers that, we can see in India? And I think over like a couple of years, this has been, a question that's bugging me a lot. And I think over the years, I've come to a conclusion that it might just be, kind of maybe a societal thing that, we don't really encourage a lot of young people and a lot of children to write in our culture. I think one thing that lots of Indians hear, especially as children, and forgive me for my terrible Hindi, but log kya kehenge? And that's something that we think about a lot in general. But, I think this is something that we really shouldn't be thinking about. As humans, we're inherently quite selfish, and I think we think about a lot about ourselves, and I don't think we realize that, people actually don't care a lot about what we're doing. So, but I think with a lot of like the Indian mindset is that, oh yeah, we should, really encourage our children to, get into professions like engineering or medicine or things like that. However, we don't really encourage our children to go into stuff like arts and, writing and, I guess more of the humanities subject, like writing subjects. And I think that's something that we should really encourage so that, one day when my children are able to open their primary school reading list, they finally see, oh yeah, there's an Indian name over there. Or, oh wow, this like brown woman wrote this amazing book about, certain things in India. And India is such a deep and rich culture, and I really think that we should spread it. Thank you so much. That was quite insightful, Dia. Thank you for highlighting such beauty of our diversity. You truly inspire young minds. Moving on to our next performances, from Kashmir to Kanyakumari, Shishma and Jaya Oswal present Musical Incredible India. Can we have a round of applause for them, please? कोई है नहीं इसके अलावा अभी यूट्यूब पे जाना स्ट्रीम दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क अभी मैं यूट्यूब पे डाल दूं प्राइवेट रिकॉर्डिंग
our Reverend Chief Guest and my dear friends, 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभ बेला पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे This will माँ be when I have the और next one. मातृभूमि We have to play this. इसकी महिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसके बाद फिर वो इकबाल ने क्या खूब कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्योंकि ये जो स्वतंत्र भारती है जिसका आज हम ये ग्लोरियस डे मना रहे हैं 80th, तो वो है सदा महान है, आज से नहीं युगों युगों से महान है। ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है, ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है, तेरे स्वतंत्र देश की बड़ी अजीम शान है। Welcome everyone on this auspicious day of Independence Day. तू शांति का प्रतीक है, तू शांति की फुहार है, तेरी हर एक नीति में ही शांति की पुकार है। तेरी वजह से शांत ये जमीन आसमान है, तेरी वजह से शांत ये जमीन आसमान है। ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है। You are a symbol of peace, addresses of love and affection. In all your thoughts and methodologies, peace prevails. Because of you, there is tranquility in the world and sky. तू क्रांति का प्रतीक है, तू क्रांति का प्रतीक है, तू क्रांति की मशाल है, जो की है तूने उन्नति वो कितनी बेमिसाल है। बनाया अपने देश को समृद्धियों की खान है, ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है। You are a representation of revolution, a comprehensive torch, flashlight. Your achievements are incomparable, and you have made your country a reservoir of prosperity. तू प्रेम का प्रतीक है, तू प्रेम का प्रतीक है, तू प्रेम की है श्रृंखला। तेरे लिए हर एक देश का है दिल मचल रहा, तू मित्रता का बंधुता का एक सबल प्रमाण है। ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है। You are an emblem of love, a series of endearment, a bond of friendship. तू शौर्य का प्रतीक है, तू शौर्य मूर्तिमान है, अभेद्य है, अजेय है, तू वज्र के समान है। रक्षा करता देश की सदा हर एक जवान है। ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है। You are a sign of victory, champion of fellowship, invulnerable, a warrior of this country. We are dedicated to shield you. तू धर्म का प्रतीक है, तू धर्म का प्रतीक है, तू धर्म का धुरीन है, तेरी हर एक कल्पना अधर्म से विहीन है। अहिंसा और सत्य पर, अहिंसा और सत्य पर तुझे सदा ही मान है। ऐ स्वतंत्र भारती तू सदा महान है। You are an absolute symbol of divinity. You are a vocalization of spirituality and an indication of ahimsa and truth. हम आजाद थे सदियों पहले, युग की शुरुआत में जब आदिनाथ भगवान थे। हम आजाद थे, फिर गुलाम हुए, फिर आजादी को पाया है। इस आजादी की कीमत का अंदाजा कभी लगाया है? अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपनी राहें, अपना स्वाभिमान, आओ आज उस धरती का, आओ आज उस धरती का आज करें संपूर्ण सम्मान। ये बात है क्रांतिकारियों की। 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन इतिहास उसके पीछे का है। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, खून की नदियां बह गई, और क्या मजाल
उनके और उनके परिवार के माथे पर एक शिकन भी आई। स्टार्ट कर लेना तो लीजिए एक वापस ग्लैंस, ब्यूटीफुल ग्लैंस जो 47 के पहले के हमारे क्रांतिकारी हुए। इन क्रांतिकारियों के खून से देश आजाद हुआ, चारों ओर खुशियां छा गई, खेत खलिहान लहलहा उठे। भारत की संस्कृति इंद्रधनुष के रंगों की तरह जगमगा उठी। कहीं गुजरात का गरबा, कहीं कश्मीर का रुख, कहीं राजस्थान का घूमर, तो कहीं पंजाब का गिद्धा। सबने मिलकर भारत की शान में चार चांद लगा दिए। तो आइए देखते हैं इन संस्कृतियों की एक खूबसूरत झलक। चलिए आपको ले चलते हैं गुजरात की ओर, जहाँ का गरबा और लहंगा चोली बहुत फेमस हो गए हैं। और अब चलिए आपको ले चलती हूँ भारत के जो भारत का शीर्ष है, जो कश्मीर है। कश्मीर की वादियों में, डल झील के शिकारों में, शालीमार और चार चिनार के खूबसूरत नजारों में। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। और none other than the pink city of India। अब आ गया राजस्थान। और राजस्थान जहाँ माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो साथ साथ शौर्य और वीरता की लोरी भी सुनाती हैं। तो लीजिए हमारी मेयर साहिबा हरियाणा से हैं। ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। तो अब मैं उसके पास का ही पंजाब है, तो दिल थाम लीजिए। बल्ले जी बल्ले, जब पंजाब का ढोल बजता है तो जिसमें खून की रवानगी तेज हो जाती है और पाँव
थिरकने लग जाते हैं ढोलक की थाप पर। वाह वाह जी वाह, क्या खूबसूरत छटा थी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। भारत माता तू सदा महान है। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सरपरस्ती में वतन की रक्षा के लिए फौजी जान की बाजी लगा देता है। किसान फसल उगाता है, पसीना बहाता है, तो देश के लिए। हम जहां भी हैं अपने कार्य को अच्छे से अच्छे करें तो देश को गर्व होता है। भारत माता मुस्कुराती है। तो आइए आज एक संकल्प लें, भारत के निर्माण का, अपब्रिंगिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, स्वच्छता अभियान का, क्लीनिनेस कैंपेन। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और माँ बाप के सम्मान का, रेस्पेक्टफुल केयरिंग एंड लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ऐसा हो हमारा भारत, हमारे सपनों का भारत। और इन आकांक्षाओं को, इन बातों को, इन भावनाओं को हमने पूरा प्रैक्टिकल शेप देनी है। तो एक बार आपने भी हाथ उठा दीजिए। Wow, that was incredible indeed. Yes, as the name says it all. Amazing, amazing performance.
I'll quickly announce the name of all the participants. Sushma, Ishita, Jaya, Parth, Pratik, Manish, Vaishali, Divya, Rakesh, Sonal, Meenakshi, Bela, Tia, Isha, Himanshu, Arya, Riya. Thank you so much. It was amazing, all the efforts you came and come so far. Thank you so much. And now I'll invite Jeet again to give the update of our upcoming webinar. Thank you. Sorry, I keep coming. It's a tough act to follow. Well done, Shishma Auntie and the whole Berkshire group. You really lifted this stage today, and thank you for turning in a great attendance and doing this at such a short notice. I'm going to give you a very short update on Perivale. So, every time I meet you, I'm going to talk about Perivale, until you get bored. So we have the councillor Tariq here, so he needs to understand, do we really have the support of the community? Yeah, this community center we are building, and we have Kiran Mehta here, who is now the head of oversight committee. So he's keeping an oversight. Some of the community centers take long, cost more, and we don't always get it right. But we're just bringing the best practice from the various communities. Maori Foundation, by Kapasi came and he gave his blessing. We hope to see Manavbai as well. And we're going to see all the community leaders. We want it to be a #1 Gen Center in terms of in the city. And obviously, we're not a temple-based organization. We're more of a teaching-based organization. So this is a land we have just bought. This is an old school, and maybe Gautambai also wanted. Today has proven that we could have, if we would have kept the registration open, we would have had at least 300 people. We had to say no on the base of health and safety grounds. So this is a property we just bought in the month of May. And these are our future aspirations. We're trying to build a community center which can deal with about 250 people. It's an old school, lot of timber structure. And Manik Uncle, who's leading this project, sorry, he couldn't be here. He has a very busy social life, and a lot of my trustee colleagues who are involved with it couldn't be here, so I'm sorry you're having to put up with me. So the works are underway. We've done the removals, exposed the building to see what is underneath it, what are the options available to us, whether some strengthening and what level of structural strengthening we need to do. We're hoping, as Councillor Tariq said, we want to have the next 15th August there. Yeah, and he has his speech ready for the next 15th August. And we're trying to have an exposition there as well. And Shubham will run through the plans for the Parisian 2026 shortly. So how you can help, you know where I'm going next. So we have a huge ambitious project here, which is nearly 2 million plus. We are halfway through, and thanks to the generosity of the community, about 80 families have come forward. And I'm hoping most of the families in the room and in the community will do something so that we get a fantastic community center, which we can be proud of for the next 20 years plus. So we have already collected nearly 900,000, and we're full of gratitude to all the major donors. And I like to name the few. Nikhil Choradia from Goldman Sachs, he has given 460,000. That's the biggest donation I think anybody in our community has given in one go. And we've had donations from US, India, UK, Dubai, etc. So please keep thinking and continue to support. And we remain grateful. We're answerable to you. We like to give you regular updates. What is the status? And everybody wants to see this community center built as fast as possible, but these things take time. So, yeah. So some of the financial information, yeah, and I'm sure children will have some ideas. And one good news yesterday, we just got our mortgage approved for 750,000, which is a huge boost as well.
So Charity Bank has given that approval. It took us a bit longer because of the nature of the property. And that's based on PINA as a asset collateral, which we have done before. And it's understood. The PINA is not going anywhere. PINA is PINA, and it's, a lot of emotions attached. And we will try our best to retain it, as long as we continue to get the support. So we're halfway through, as I said, and these are the phases and the timescales. We are reviewing, they're under review, what phases we do and how and what are our priorities. So you'll all know about, if you are thinking of supporting the Perivale, pollution is coming. That's a great time. We will have great activities, and maybe I invite Shubham, who's going to talk about the pollution and what the pollution 2026 looks like. Please come in great numbers and bring your friends to pollution. And thank you for your support for Perivale. Thank you. Some of my trustee colleagues are having well-deserved breaks. So Dr. Sunil Duggar, he can't be here, but he sent his Banja Harsh is here. Maybe he has to give the speech next time. Yeah. So, yeah, he's been given enough notice, Steve. JVB everyone, thanks a lot for coming and celebrating this very special occasion with us, the 80th Independence Day of India, with JVB London. So just giving you a bit update of, we have a packed schedule for pollution. Pollution, as all of you must be aware, it's an 8-day special festival for Jains, and it's the most important, arguably, event in the entire year. So we'll be having it during 8 to 15 September this year, and we'll be having full day schedules, something for everyone at one or the other time of the day. So we'll start with daily lecture series by respected Vijay Bhayaji. He is very well known figure both in London as well as in India. He has agreed to specially fly earlier from India for conducting this lecture series with us. And he'll be with us for every day for the community to take benefit of that opportunity. Then, as soon as Harsh listens to me, the other thing is we've got another special singer, Vaibhav Bhatmar. He is again a world-renowned Bhakti presenter, specifically in Jainism, and he has presented earlier as well in JVB, and he was much loved and revered. So he'll be with us every day in the evenings from 8:30 till 9:30 at least, and if it were up to Jeet, then he'll go on beyond 9:30 as well, with his apart. So we'll be having him every day after Pratikrama. So again, for those who are aware, so Pratikrama happens immediately after sunset. So during this time, it will be around 7:30, 7:45-ish. So that is when the Pratikrama will start. Once that ends, then we'll be having Bhakti. All of that is being conducted in a specially, we have got an external venue this time, and we'll be looking forward to having you, or as many of you as possible, for that. So having said that, if we go to, none of this is possible, of course, without the gracious support of all of you and all our devotees and our well-wishers. So what we've done is that we've got a special sponsorship opportunity for every day of the pollution. So you can come in and sponsor a day. What that means is that if there is food on that particular day, then the food can also get sponsored, and otherwise you get that love and benefit of being able to contribute to the religious community during this very auspicious period. We have seen in the past that often these slots fill out very quickly. So we would encourage all of you to get in touch with any of us and put forward your names to be able to sponsor a day. You can also come forward as a group and sponsor a day accordingly.
So that's pretty much it. I will be happy to take any other questions if you would have. But yeah, looking forward to having you all participate in Pollution with us. It's going to start pretty soon in the 30th of September. Lastly, there's this WhatsApp group that we have. We'll keep on sending more information on this WhatsApp group as the events unfold. So we would encourage you to just scan this and get registered on this WhatsApp group if you're not there already. Thanks. Thank you, Shubham. Thank you, Shubhamji and Gigi, for all the updates. Next performance is special. A bond and a message. Presenting Puneet and Yuvan with Kandhe Se Kandhe Milte Hain, a father and son duo. Puneet and Yuvan. Okay. ये वाला. कितना खाना होगी? खा लो बेटा। वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया, इस बार 2 राखी बनवा लो। पिछले रक्षाबंधन के भी नहीं दिया। आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सर्वर को रिपोर्ट करना होगा। चलिए। हम चलते हैं से दुश्मन के हिलते हैं कदमों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं से दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथ में है बस इतना ही कहना अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघला अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है चारा कदमों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब से हिलते हैं कदमों से मिलते हैं कदमों से हम मिलते हैं हम चलते हैं जब से हिलते हैं बढ़ता क्या खून कराना भूल चलेगा पीने वाली ने एकदम छोड़ने की जगह बीज गाड़ी है तो
Oh! Wow, this was amazing. So heartwarming. A beautiful message of togetherness, father and son. Very nice. That's why we kept this for last, Josh bana rahe. Yeah, right. Okay, so now we have Tia Mehta. Tia, are you here? Yeah. So Tia is going to dance on Desh Rangila. Okay, Amay, you can be ready, okay, after Tia. Okay, yeah, okay, no worries, yeah. Then, Amay, you can come, please. What are you going to do, beta? Are you going to dance? Okay, he's going to dance. What song? There is, okay. Are you going to play? Yeah, this forward. नहीं फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड किया इसका कीजिए कसम सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी हाँ मुझे भेजो ये रहा किसका आपका नाम शुभम जैन जेबी में अब जेबीबी में जाएंगे तो फिर धारा कहाँ है क्या ये आपका है क्या No, reading नहीं है. Reading नहीं. then That to come, she's ready. After, yeah, that's fine. नहीं आप हेलो बुला बुला टिया को बुला दो हाँ। आपके पास टिया का म्यूजिक है ना यहाँ पे Yeah. हाँ 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 या हाँ, मैं बुला दूँ ठीक Okay, maybe this one. yeah this one मुझे भेज दो okay one goal was offside
Very beautiful. Very beautiful, Tia. Very colorful. Thank you for the performance. Can we have Amin Mehta next, please? And I would like later on everyone to come and introduce yourself. सबसे पहले ज्योत्सना बहन गुजरात समाचार से बहुत बहुत स्वागत है आपका. Please come here, say a few lines to us. And सारे यहाँ उपस्थित guests, विनोद भाई कपासी, किरण भाई, डॉक्टर गौतम अंसारी और भी सारे बड़े. बहुत अच्छा लगा आप सबको आकर. Would you like to say? I think this ભાઈએ મને કહ્યું કે ગુજરાતીમાં બોલજો અને બહુ કે તમે બધા ગુજરાતી અંડરસ્ટેન્ડ કરશો. આમે ગુજરાતી અને હિન્દી બે બહેનો તો ખરી જ ને. બહુ ફરક નથી, ગુજરાતીમાં જ છે ને અમે હિન્દીમાં ને. સૌપ્રથમ તો આપ સૌને આપના ભારતના સ્વાતંત્ર્ય દિનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને હું મળી આવી પણ જો ના આવી હોત તો મને અફસોસ થાય. એટલે આજે ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થયો. અને સૌથી વધારે તો એ કે નાના બાળકોએ જે રીતે પરફોર્મ કર્યું એ ખૂબ જ અભિનંદનને પાત્ર છે. બધા જ ભૂલકાઓ, એમના પેરેન્ટ્સ, એમના ટીચર્સ, જે કોઈ એમને ટ્રેન કર્યા અને ઉત્સાહિત કર્યા એ સૌને ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપ ખૂબ સરસ કામ કરો છો. અને જીતભાઈ આપે પણ મને અહીં આગળ આવવાનો મોકો આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણે વાત કરીએ કે આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો એ પહેલા ઘણા ઘણા શહીદોએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે. અને એમના બલિદાનને એળે ન જવા દેવાય એ માટે આપણે સ્વતંત્ર ભારતના નાગરિકો તરીકે અને આપણે ભલે વિદેશમાં રહીએ પણ આપણું હૃદય તો ભારતમાં જ છે, વતનમાં જ છે. એ અત્યારે આપ સૌનામાં જોઈ શકાય કે તમે બધા આપણે બધા ભલે માયલો દૂર દેશથી વસતા હોઈએ પરંતુ આપણામાં જે સ્વદેશ પ્રેમ છે, જે લાગણી છે એ ખરેખર આવીને આવી જળવાઈ રહે. અને એક નાગરિક તરીકેની સ્વતંત્ર ભારતના નાગરિક તરીકેની આપણે આપણી ફરજ પણ બજાવીએ. સ્વતંત્રતાનો આનંદ તો આપણે સૌ લઈએ છીએ.
એટલે એને આપણે આગળ વધારીએ અને આજે ડોક્ટર ગૌતમ ભણસાળીએ પણ એમના પ્રવચનમાં ખૂબ જ સરસ આપણને સ્વતંત્ર ભારતની એક આઉટલાઈન આપી દીધી કે શોર્ટમાં આખું ભારત આપણી સામે ખડું કર્યું કે ભારત દેશ આપણો કેટલો આત્મનિર્ભર છે અને કઈ રીતે આપણે વિકાસ કરી રહ્યા છે આપણી 80 વર્ષની જે સરસ સફર આપણને કરાવી એ માટે પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ડોક્ટર ગૌતમ ભણસાળીને અને અવારનવાર સુંદર કાર્યક્રમો કરતા રહો એવી મારી શુભકામના અને છેલ્લે सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले है उसकी वो गुलसिता हमारा तो आप सबने फरीથી એકવાર અભિનંદન બધાને ભૂખ લાગી હશે ત્યારે હું થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Jyotsna Ben, or I hope you mentioned JVB in your Samachar time and again. And thank you to everyone who came here. I think we all will go with a feeling of, that independence, India ka spirit. And I think we all will leave with a proud feeling of being an Indian. India is incredible and unique, and we are so fortunate to be born in India and celebrating the festival here. Can I have a show of hands if you're new here in JVB? It's your first time. Would you like to come and introduce yourself? Just so that you get, it's just a way of getting the community together, getting you, involved with the community. There's so many things we do here. Hi guys, thank you so much. It just happened to be because we heard this national anthem in the morning and we couldn't resist ourselves to come out from our house and join you guys. So we recently moved here in Pinner and it's so much pleasure to join this community. Especially when I see so many Indian faces in the country, I really feel proud and I really want to join the community so that the culture, the authenticity of India will never go from our child. Like it's very important that being here in the UK, we should have the presence and the feeling of being Indian. So I think by joining this community, I'll get that for me, my family, and especially for my child Riva. So thank you so much for giving us an honor to welcome us. Thank you so much. It's not Finnair, they're next door. Yeah, we just live next door. In terms of introduction, my name is Gretel. We are also Jen, following Jen. I'm from Ahmedabad, Gujarat, and I work in an IT company. Yeah, so that's it for myself. Thank you so much. Yeah, so welcome Shwetal, and Shwetal, we have Samiti, Anands. They come from India and they stay here. They are residing in India for a short time. But we have them throughout. We have their guidance. We have lectures here Sunday. We have our Gyanshwala every Friday, which is online and in person. So make sure you enroll your child and you'll enjoy. Stay connected. Stay with us during Parishwan. Yeah. Anybody else who wants to come and introduce? Anybody else who's new? कोई भी नहीं आना चाहता है. I can see some new faces. Before बहुत अच्छा डांस किया आपने, beautiful. So I think we all parents, if you bring your children and dance with them or do any act, it encourages your young generation also. How do we encourage them? How do we make them follow our culture, our songs, our language? The only way is to first humbly participate करें तो हमारे बच्चे भी करेंगे. So I would encourage all of you to participate. So just a minute, before I do that, I just want to say a big thank you to Dhara and Priyaji Tate for the fantastic hosting and for the new executive committee. They did a fabulous job. You can see the decor, everything is fantastic, all led by Jeet. When Jeet is there at the forefront, everything is at the top. So I think it was a fantastic program today. Beautiful performances. A big thank you to the wedding team, the whole wedding. सारे जो लोग आए, इतना beautiful performances किया सबने. That is really बहुत सराहनीय है. Especially the kids who stayed here till the end, So that's fantastic. Anybody who's new would like to come and introduce yourself, that would be great. Thank you. First of all,
the main thing I got amazed by looking at this is I never felt that I'm in London. Thank you, everybody. The way you are preparing yourself and doing and making foundation for our kids, right? And let me highlight the sanskar which we need for our kids and young generation, right? I think this is the best way to do it to make sure that they are still in touch with back our home, what we have done, all the freedom fighters, what they have fought, and though we are in the country which actually ruled us long back, but I think this is the best way to so that this is not the same India. And the speech given by doctors are amazing, really. And I would say, wow, what a voice, what a preparation, wow, amazed, man. And I feel sorry that I joined this JVP today only. I feel like I'm now have missed so many things already, but going forward, to be honest, I would like to be a part of this. And amazing, I really give kudos to everybody. क्या काम कर रहे हो आप मजा आ गया मतलब the preparation बच्चों का and the way you are giving the write-ups and all amazing. So glad that we have community here who are actually keeping our fort right now and keeping the flag posting right. Thanks a lot. And everybody was on time. Thank you. Hi, sorry, my bad. I'm Puneet Jain and I have been living here for more than 10 years now. And I'm working in IT and in financial domain, so I will look forward to meet you guys. Thanks a lot and give me the opportunities. Thank you. Anybody else? Abhi? Hello everyone, JVB. We are not new here, but we are so lucky we didn't join. This long back we are here in this area for 8-9 years. But pleasure to see so many cases, so many Jain communities and here happening. So we are really amazed. Happy to join this group. I already joined this group. I just saw it. Thank you everyone. It was a great meeting. My name is Atul Jain. I work for IT. And all the performances were very nice. सबके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे मेरी कोई फॉरवर्ड की हम हमेशा आए अब जय हिंद Anyone who has not joined JVP WhatsApp group, please join. You'll get lots of information about it. Yeah. JVP की तरफ से और JVP की तरफ से मैं रैगिंग के जो पार्टिसिपेंट थे उनको कॉल करना चाहूंगी स्टेज पे उन्होंने 2 दिन में मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज हेमंत भाई जितेश भाई ये रैगिंग के गेम्स हैं कोई भी काम हो और इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं लेडीज को भी मौका देते हैं और बच्चों को भी साथ में लगाया हुआ है तो ऑल फ्रॉम रेडिंग ये जैन एसोसिएशन है रेडिंग की और अभी रिसेंटली हमने एक पाठशाला भी शुरू की है बच्चों के लिए तो बच्चों को बहुत उत्साह है वो बड़े अच्छे से अपना ये सीख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नवबार मंत्र फिर उसके साथ साथ मेडिटेशन ऑन विच पॉइंट एंड विच कलर तो ये सारी बातें हमारा सारा ग्रुप कर रहा है और मैं उनको अपनी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ ये हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं लेकिन इतने शार्ट टाइम में इसका पाना और देश के लिए ये उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है ऐसे लोग जब तक हमारे साथ रहेंगे ऐसे यंग पीपल तो वी कैन डू मच मोर थैंक यू वेरी मच We are just representing all the participants here. And we are from the Berkshire Jain Samaj, which is in Reading, based in Reading, but we cover South, not South, Maidenhead and Basingstoke area. And obviously, we are very proud to be part of JVP as well. And Dhanyavad everyone, and I would like to say thank you to JVP team for inviting us and part of this 80th Independence Day of India. So I'd like to say thank you on behalf of Berkshire Jain Fund, and we will continue to provide our sincere support to JVP and would expect the similar sort of assistance from JVP team towards Berkshire Jain Group as well.
Thank you very much, and it's a pleasure to be here and part of the larger Jain community. Thank you very much. I'd just like to thank you for inviting us. And it's been a pleasure. We continue to support each other and grow the center. JVB.